Hi everyone, this is Milind Surana. I'm a senior HR trainer at Metier HR Services. Today in this short demonstration of 15 minutes, I'll show you how you can attend your practical HR journalist training classes sitting at your home, office, maybe a cyber cafe or even from your Android device. The technology which we use is called Cisco WebEx. Cisco WebEx is one of the most advanced systems used by thousands of organizations nowadays for their corporate training purposes. The best part with Cisco WebEx is, first, physically you don't have to travel anywhere to take classes, so this saves a lot of time of yours in traveling. Second, if you are working or studying, you can decide your classes timings after or before your work timing, so you get time flexibility. And the third, it supports two-way conversation. So during the session itself, you can ask as many questions you want. Okay. During this short demonstration, I'll be using both the languages, Hindi and English, because some of you might be comfortable with English, and of course, आप में से कुछ लोग हिंदी में comfortable होंगे. Kindly note, this demonstration is taken from one of my live classes on Provident Fund. Thank you. Yeah. Hi everyone. I hope everyone is able to hear me. So first we'll check out the voice, but before that I'll start off with my camera, I think so. You know? 1 second, I'll start my camera first. Okay. Yeah, great. I hope now everyone is able to hear me. So as usual, first we'll check down the voice and then we'll start off with the session for today. So सबसे पहले, hi Ronit, how are you? Are you able to hear me, Ronit? Yes, I'm able to hear you. Wow, very nice. Even your voice is very clear, Ronit. Hi Priya, how are you? Are you able to hear me, Priya? Yes, Milan, I'm able to hear you. Wow, wonderful. Even your voice is very clear, Priya. Hi Joylene, how are you? Are you able to hear me, Joylene? Yes, Milan, I'm able to hear you. How are you? Even I'm doing great. Thank you for asking. Wonderful. Even your voice is clear, Joylene. Okay. So great. Nice to hear all of you once again. I hope everyone is through with their assignments and the ESI topic which you have learned in the last session. So today we'll be starting one of the most important topics in our legal compliances, that is the Provident Fund. I'm sure everyone is well aware, if you are handling legal compliances in your organization, Provident Fund would be one of the major responsibilities. And today, हम Provident Fund में भी सबसे important part, that is calculation part सीखेंगे. Okay. So the first slide will give us an information about the financial obligations or the calculation rules in Provident Fund. But before we go into the details of Provident Fund, first we'll try to understand what exactly Provident Fund is. Provident Fund exactly होता क्या है? Okay. Provident Fund is basically a kind of a retirement benefit for our employees. Correct ना? Provident Fund एक तरीके का retirement benefit है हमारे employees के लिए. Okay. In India, generally we say ना कि till 60 years of age will work. Okay. And of course, when we work, when we go to job, we get salary. Correct. And this is how we sustain our cost of living. Correct. जो हमारा monthly expenses हैं, हम इस salary से manage करते हैं. Okay. But when we get retired, say for example, जब 60 age के बाद हम retire हो जाएंगे, हो सकता है तब हम शायद job भी ना करें. And of course, in that case, no organization is not even they're going to provide any salary to us specifically. Okay. But of course, उस समय भी हमारा, है ना, उस समय भी हमारा, है ना, सर्वाइवल के लिए कॉस्ट होगा. तो ऑफ कोर्स उस लिविंग कॉस्ट को हम कैसे सस्टेन करते हैं? हम कुछ सेविंग्स करके करते हैं. करेक्ट ना? जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट का कुछ वर्किंग समझना है हमको, तो यू शुड ऑलवेज कंपेयर इट विद अ बैंक. हमेशा हमको उसको बैंक के साथ कंपेयर करना चाहिए. जैसे अगर आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना है, तो एक तरीका क्या है? हम बैंक में एक अकाउंट ओपन कर दें. करेक्ट. जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो ऑफकोर्स बैंक हमें एक अकाउंट नंबर देता है. करेक्ट ना? एंड एवरी मंथ हमने एक डिसाइडेड अमाउंट उस अकाउंट में एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया. सो आफ्टर सम इयर्स व्हेन यू गेट रिटायर्ड, एक लमसम अमाउंट हो गया होगा, एक अच्छा खासा अमाउंट,
द अमाउंट विच यू एक्यूमुलेटेड एंड ऑफ कोर्स बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया, करेक्ट ना? ये तरीका नंबर 1 है रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए, अगर हम बैंक के पास जाके अकाउंट ओपन करें तो। प्रोविडेंट फंड भी कुछ इस तरीके से ही वर्कअप करता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो यू गेट एन अकाउंट नंबर, इन द सेम वे जब हम अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी देते हैं तो द एम्प्लॉय गेट्स एन अकाउंट नंबर। जैसे हम बैंक में एवरी मंथ एक फिक्स डिपॉजिट या फिक्स्ड अमाउंट एक्यूमुलेट करते हैं, प्रोविडेंट फंड में भी एक फिक्स्ड अमाउंट एक्यूमुलेट होता है, बट द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों उसके रिटायरमेंट के लिए एक्यूमुलेट करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, whenever we talk about provident fund actually एक चीज नहीं है। प्रोविडेंट फंड बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है उसमें ईपीएफ सब अकाउंट नंबर 1, सेकंड पार्ट है पेंशन फंड सब अकाउंट नंबर 10, एंड ऑफ कोर्स द थर्ड पार्ट इज ईडीएलआई सब अकाउंट नंबर 21। आई एम श्योर सबने रीडिंग असाइनमेंट किया होगा तो ईडीएलआई के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज ईडीएलआई? एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉय के डिपॉजिट से लिंक की गई एक इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफिकली। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रोविडेंट फंड एक्चुअली एक चीज नहीं है। ऑफ कोर्स हम में से तो कोई रिटायर नहीं हुए हैं, पर आपने देखा होगा आपके पहचान में कोई रिटायर हुए होंगे, तो आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक लमसम अमाउंट मिला होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बिकॉज ऑफ देयर ईपीएफ सब अकाउंट नंबर 1, करेक्ट? फिर आपने देखा होगा उनको मंथली पेंशन भी मिलता है, वो बिकॉज ऑफ देयर पेंशन फंड सब अकाउंट नंबर 10। एंड ऑफ कोर्स आपने देखा होगा किसी की डेथ होने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स को ये बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बिकॉज ऑफ ईडीएलआई सब अकाउंट नंबर 21 एक्चुअली। ओके, तो जब भी हम प्रोविडेंट फंड की बात करें, ऑलवेज रिमेंबर प्रोविडेंट फंड एक नहीं है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, नाउ कैलकुलेशन पार्ट को सीखने के लिए आज सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कैलकुलेशन पार्ट में इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट नॉलेज कैरी करते हैं, एंड इंटरव्यूज में व्हेन दे गो ऑफ कोर्स दे शेयर एंड ऑफ कोर्स द इंटरव्यूअर रिजेक्ट्स देम एक्चुअली। ओके, सो आज हम कैलकुलेशन में थोड़ा एक्सपर्ट होंगे, तो कैलकुलेशन पार्ट को या प्रोविडेंट फंड के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सीखने के लिए आई हैव ओपनड अप अ स्लाइड ऑन योर स्क्रीन। आई एम श्योर एवरीवन इज एबल टू सी दिस टेबल। This is one of the most wonderful design table for learning this calculation part. दिखने में बहुत सिंपल है ये टेबल, बट अगर हम इस टेबल को ठीक से समझ जाएंगे तो हम कैलकुलेशन पार्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे आज एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले हम टेबल कैसे बनाए देखते हैं। टेबल में जो येलो वाला पार्ट है, दिस आर बेसिकली ओवरहेड्स, करेक्ट? दिस आर बेसिकली ओवरहेड्स। ओके, एंड ये टेबल में 2 रोज है, एम्प्लॉयर रो एंड एम्प्लॉय रो, एम्प्लॉयर रो एंड एम्प्लॉय रो। पहले हम नीचे का रो देखते हैं, एम्प्लॉय रो इनफैक्ट। ओके, सो एम्प्लॉय रो में 12% लिखा है। ओके, एंड ये कौन से कॉलम में लिखा है? ईपीएफ सब अकाउंट नंबर 1 के कॉलम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय हैज टू कंट्रीब्यूट 12% which is going to go to his EPF sub account number 1. Now 12% किसका 12%? टोटल सैलरी का 12% क्या? जैसे मेरा टोटल सैलरी है फॉर एग्जांपल 10,000, so 10,000 का 12% comes to 1,200। मेरा ऑर्गेनाइजेशन और मेरे HR 1,200 मेरी सैलरी से काटेंगे, 8,800 मुझे पे करेंगे, और 10 है ना, ऑफकोर्स 1,200 मेरे EPF सब अकाउंट नंबर 1 में डालेंगे क्या? नहीं। What Provident Fund Department says is, we are not concerned about your total salary. Nowadays in organizations, there are salary structures, correct? When we go in part number 2, even we are going to learn how to design a proper salary structure and all those things, correct? But आजकल organization में salary structures होते हैं, उसमें basic होगा say 5,000, फिर मुझे house rent allowance मिलता होगा 2,000, medical allowance मिलता होगा 2,000, and ये सब मिला के total है ना, हो सकता है 10,000 हो। So what Provident Fund Department says is, okay, we are not concerned about your employees' allowances and the total salary. We are concerned about the basic का figure what is getting, and of course अगर आपकी organization में dearness allowance है, so entire calculation in Provident Fund majority of the time would be done on basic plus dearness allowance.
आजकल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में डियरनेस अलाउंस तो नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ टाटा ग्रुप कंपनीज में। ऑफकोर्स गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में यू डू हैव डियरनेस अलाउंस स्पेसिफिकली, ओके। इसीलिए एज एन एचआर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम बेसिक के ऊपर ही कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअली, ओके। So employee has to contribute 12%, but this 12% would be calculated on the basic salary. Like my basic salary is 5,000, so 5,000 ka 12% comes to 600 rupees. What my HR or organization is going to do is 10,000 में से minus करेंगे 600, 9,400 मुझे पे करेंगे, एंड ऑफ कोर्स 600 वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो मेरे उस मंथ के ईपीएफ सब अकाउंट नंबर 1 के डिपॉजिशन में डिपॉजिट हो। अपार्ट फ्रॉम दिस 12%, अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो आगे सब जगह एनए लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम दिस 12%, एम्प्लॉय इज नॉट लायबल टू पे एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूशन। Apart from this 12%, as an HR or as an organization, we cannot deduct any of this other amount from employee salary actually, okay? So employee contribution समझ में आया सबको? Anyone has any question till here? I hope everyone is very clear है ना employee contribution तक का। प्रिया clear till here? है ना? Clear प्रिया? Yes, it's all clear. Wonderful. Okay, so we'll move forward with the employer contribution now actually, okay? Now employer contribution का मतलब है employer will have to pay from his own pocket. He cannot deduct it from the employee's salary. Okay, so employer contribution में सबसे पहले क्या है? 3.67%, और वो कहाँ कौन से कॉलम में है? EPF सब अकाउंट नंबर 1 के कॉलम में। इसका मतलब क्या है? Employer will have to contribute 3.67%, which is going to go to his employee's EPF sub account number 1. Employee's EPF sub account number 1. Apart from this 3.67%, employer is also liable to contribute 8.33%, which is going to go to his employee's pension fund sub account number 10. Now here comes an interview question. So before coming into trainings, I was expert in assessing HR, okay? And in this course of experience, so many times I've seen कि technicalities को लेकर के interviewers HR को बहुत specific questions ही पूछते हैं या पूछ पाते हैं। But tomorrow if you land up for an interview and if this organization wants you to handle provident fund activities of your employees, तो ये क्वेश्चन शायद आप बहुत बार फेस करोगे, इसलिए हम क्लासेस में बहुत बार है ना टॉपिक के साथ साथ उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करते हैं। सो आई एम श्योर हम में से बहुत से है ना कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू में गए होंगे तो ये क्वेश्चन फेस भी किया होगा कि व्हाट आर द कैलकुलेशन रूल्स ऑफ प्रोविडेंट फंड और द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। 95% ऑफ द कैंडिडेट्स इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट आंसर देते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12%, इतना ही कहते हैं। अगर हम में से कभी किसी ने ये आंसर दिया होगा तो आई एम श्योर हम में से शायद जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, बिकॉज इट्स एन इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट आंसर। Now you people are taking special training, so your answer should also reflect that specifically, okay? So what is the correct answer for this kind of question? There are two kinds of contribution in Provident Fund. First is an employer contribution, second is an employee contribution. Employee has to contribute 12%, which is going to go to his EPF sub account number 1. वो कहाँ पे जाता है वो भी बताना जरूरी है। जिन्हें थियोरेटिकल नॉलेज है they'll never know what is EPF sub account number 1, करेक्ट? जो प्रैक्टिकली रियली उसको है ना सीखा है या है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है वही बता पाएगा कि वो कौन से अकाउंट में जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 12%, employee is not liable to pay any other contribution. However, employer is also liable to pay certain contributions, जिसमें 3.67% goes to EPF sub account number 1, 8.33% goes to pension fund sub account number 10 actually, okay? Now employee का 12% तो समझ में आता है, फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स एम्प्लॉयर का 12% क्यों कहते हैं? The reason behind that is
अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तो अगर आप ये 3.67 को और 8.33 को ऐड कर देते हैं, 3.67 प्लस 8.33, दैट कम्स टू 12%। बट जब दोनों अलग अलग अकाउंट में जाता है तो एक साथ क्यों बताना? इसी से इंटरव्यूअर गेट्स टू नो दैट वेदर यू जस्ट कैरी सम थियोरेटिकल नॉलेज या स्टडी समवेयर है ना, बुक्स और समथिंग, और रियली आपको प्रैक्टिकली भी आता है स्पेसिफिकली। ओके, apart from this 8.33%, employer is also liable to contribute 0.50% for EDLI sub account number 21. बहुत से HR के बहुत से कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं है what is EDLI. Apart from this 0.50%, employer is also liable to pay certain administrative charges. Now देखिए word change हो गया ना, अभी तक I was using a word contribution, now I started using word charges. दोनों में difference क्या है? Contribution का मतलब ये employee का ही money है, we are just है ना depositing with the PF department. Okay? Charges का मतलब जैसे again we'll compare it with the bank, it's obviously understanding है ना through a comparison. जैसे बैंक के अकाउंट में आप मनी डिपॉजिट करते, मनी विड्रॉ करते, वो आप ही का मनी होता ना, करेक्ट, इट्स योर मनी ओनली। तो बैंक कैसे चलता है? फिर बैंक जो आपको बैंकिंग चार्जेस लगाता है उससे चलता है। जैसे डीडी बनाना है तो बैंकिंग चार्जेस है, करेक्ट ना। आजकल प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी से ना कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, करेक्ट ना। आप क्वार्टरली से 5,000, 10,000 अलग अलग, there are different banks who have different kind of system. If you don't maintain, then you'll have to give us an account maintenance charge of 200, 300, maybe 500. Okay, correct है ना। जैसे बैंक आपको बैंकिंग चार्जेस लगाता है या अकाउंट मेंटेन आपका कर रहा है इसलिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगाता है, इन द सेम वे प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट भी कहता है कि हम अपने आपके एम्प्लॉय का ईपीएफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। इस अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कहते हैं। टू मेंटेन ईपीएफ सब अकाउंट नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पहले 1.10% था, अब ऑफ कोर्स ये रूल चेंज हो गया है, अब ये 0.85% आ गया है एक्चुअली। ओके, अब ये 0.85% आ गया है एक्चुअली। ओके, okay, so of course to maintain EDLI sub account number 21, you know, of course 0.01% administrative charges pay करना होगा employer को, and of course to maintain pension fund sub account number 10 there are no administrative charges payable nor by an employee, neither by an employer actually. Okay, so coming back to our interview question, हमने pause किया था बीच में, वापस उस पे आते हैं। So tomorrow if we land up for an interview and someone asks us, okay Joylene, tell me the calculation rules of Provident Fund. So the best answer that Joylene can give is, there are two kinds of contributions in Provident Fund. First is an employer contribution, second is an employee contribution. Employee has to contribute 12%, which is going to go to his EPF sub account number 1. But apart from this 12%, employee is not liable to pay any other contribution. However, employer is liable to pay certain contributions, जिसमें 3.67% will go to his employee's EPF sub account number 1. 8.33% will go to his employee's pension fund sub account number 10. Of course, 0.50% will go to his employee's EDLI sub account number 21. Apart from this contribution, employer is also liable to pay certain administrative charges. To maintain EPF sub account number 1, 0.85% administrative charges are payable. Of course, to maintain EDLIS account, 0.01% administrative charges are payable. And of course, there are no administrative charges payable for maintaining the pension fund account. Okay, so everyone very clear till here? हमने बहुत डिटेल में कैलकुलेशन पार्ट को समझा। Anyone has any question till here before we move forward? है ना? So yes, Priya, I think so you have some questions. So you can come up with your question, Priya, then we'll move forward. Actually calculation rule समझ में आ गए,
बट Okay. इसका प्रैक्टिकल यूज सैलरी स्ट्रक्चर में और मंथली पीएफ रिटर्न में कैसे होगा? हाँ, correct. Very good question. So the next part we will be moving forward. Actually हम उसी part पे जा रहे थे. हमने calculation part को तो बहुत अच्छे से समझ लिया या rules को बहुत अच्छे से समझ लिया. Then the next part will move on to the next slide and understand कि इस calculations का effect salary structuring में कैसे आता है employees के, and as an HR हम monthly depositions या returns कैसे file करते हैं actually. Okay, so we'll move on to the next slide and understand the same. Yeah. Hi once again. I hope all of you enjoyed this short demonstration of 15 minutes. Okay. So if you have any further questions or queries, you can contact us on 0913 000 I'll repeat. If you have any further questions, you can call us on 0913 000 or else you can also visit our website for more details. That is www.metierjobs.in. www.metierjobs.in. Thank you.